Assalamualaikum, dear students. So today I am here to discuss a topic from unit number 1, that is fundamentals of chemistry. Before going towards the topic, I have a question that can we weigh a single atom? So the answer is no. Actually, if we weigh a single atom, it will give us such a smaller value which is impractical to work with. मतलब ये कि अगर हम एक एटम को वे करते हैं तो वो इतनी छोटी वैल्यू देगा कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ वी फाइंड आउट द वेट ऑफ ए सिंगल एटम. सो टू अंडरस्टैंड दिस, actually I have a general example over here, and you can see in this picture that a greengrocer is selling his vegetables. आप यूजुअली जब एक शॉपकीपर के पास या ग्रीन क्रॉसर के पास जाते हैं कोई सब्ज़ी ख़रीदने, लेट्स सपोज़ आप उससे कहते हैं कि मुझे 1 kg कैरेट्स दे दें. तो आप देखते हैं कि वो अपने तराजू में एक तरफ 1 kg का वेट स्टोन रखता है और दूसरी तरफ वो कैरेट्स को ऐड करता है. And he keeps on adding these carrots until and unless there is equilibrium between the panes of balance. ठीक है, कि जब तक वो दोनों पल्ले जो हैं तराजू के बराबर नहीं हो जाते उस वक्त तक वो उसमें कैरेट्स डालता जाता है. और जब उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो मतलब उनका वेट बैलेंस हो गया. अब यहाँ पे जो वेट स्टोन है 1 kg का, इट इज़ कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड, यानी कि वो स्टैंडर्ड है. और जो वेजिटेबल्स का वेट है इट इज़ कंसिडर्ड एज रिलेटिव, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड के साथ वेजिटेबल के वेट्स को कंपेयर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का वेट हो गया रिलेटिव. सो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस जनरल एग्जाम्पल, नाउ we will speak about relative atomic mass. So what is relative atomic mass? The relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12th the mass of carbon 12. यानी कि यहाँ पे चूँकि हम एक सिंगल एटम को वे नहीं कर सकते तो कार्बन को साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड ले लिया, जस्ट लाइक द वेट स्टोन, राइट, which we have discussed in the previous slide, a general example. तो वेट स्टोन की तरह कार्बन को स्टैंडर्ड ले लिया और बाकी के एलिमेंट्स का वेट कार्बन के साथ उन्होंने कंपेयर कर लिया. चूँकि बाकी एलिमेंट्स का वेट कंपेयर हुआ है कार्बन के साथ, तो डेट्स वाई द वेट ऑफ अदर एलिमेंट्स इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक वेट. यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, लाइक वेट स्टोन, एंड द वेट ऑफ अदर एलिमेंट्स इज़ लाइक द वेट ऑफ वेजिटेबल्स. So if we measure the mass of an atom in grams or kilograms, it will be an extremely small value, and we have already discussed this point earlier कि हम एटम के वेट को अगर ग्राम्स या किलोग्राम्स में लेते हैं तो वो हमें इतनी छोटी वैल्यू देगा कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. डेट्स वाई एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स आर कंपेयर्ड विद कार्बन बीइंग टेकन एज स्टैंडर्ड. ठीक है, कि कार्बन को स्टैंडर्ड लेके बाकी एलिमेंट्स का जो वेट है वो हम उसके साथ कंपेयर करते हैं. नाउ here you can see in this picture that on one side we have a single carbon atom, and if we divide this single carbon atom into 12 equal units they will be similar. यानी कि एक कार्बन एटम ले लें, कार्बन एलिमेंट ले लें, या फिर हम उसको 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दें, दे आर सिमिलर. ठीक है, सो व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट? Atomic mass unit is the mass of 1/12th the mass of an atom of carbon 12. So as in previous slide you have seen that if we divide a carbon atom into 12 equal units, and if we pick up one unit out of those 12 units, it will be like 1/12th the mass of an atom of carbon 12. So out of those 12 units we have picked up one, which is written as 1/12th, and this is basically known as atomic mass unit. Then here I have few calculations, like atomic weight of carbon 12 is equal to 12 grams is equal to 1 mole. You know that कि जो आपके पास एक मोल होता है उसके अंदर ग्राम
एटॉमिक मासेस आते हैं, ठीक है। यानी ग्राम एटॉमिक मासेस या ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं वो हमेशा मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 12 का जो एटॉमिक वेट है, जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मोल। एंड लाइकवाइज 1 मोल ऑफ कार्बन 12 विल कंटेन्स Avogadro's number of atoms, that is 6.023 into 10 raised to power 23. But why we are discussing these things over here? So let's move towards the next slide. So actually we are going to convert AMU into grams. AMU is a measuring unit while grams is also a measuring unit. Now what is the relationship between AMU and grams? Like how AMU is converted into grams or how it is related to grams. So for that purpose I have few calculations over here. जिस तरह की पिछली स्लाइड में हमने ये कहा कि जो 1 मोल कार्बन का होता है इट कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड इट हैज़ 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे उसको रिवर्स करते हैं कि 6.023 इफ़ 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स contains 12 grams of carbon, then 1 atom of carbon will contain how many grams of carbon, right? So actually we are going to find out the relationship between 1 atom of carbon 12 and grams of carbon 12. So by cross multiplication, multiplying 12 with 1 and then dividing it with 6.023 into 10 raised to power 23, there comes out a relationship between 1 atom of carbon 12 and grams, means 1 atom of carbon 12 is equal to 1.993 into 10 raised to power 23 grams. These are very easy calculations, you can do it very easily. Then next, finally converting AMU into grams. सो पिछली स्लाइड में हमने 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और ग्राम्स के बीच में, यानी 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1.993 इंटू 10 रेज टू पावर 23 grams of carbon. This is 1 atom of carbon which we have find out in the previous slide. Now if 1 atom of carbon 12 is equal to 1.993 into 10 raised to power 23 grams, then 1 AMU is equal to how many grams? So again, by doing cross multiplication, which is very easy, that multiplying 1.993 into 10 raised to power 23 with 1 and dividing it with 12, which is the atomic weight of carbon, we will get here 1.67 into 10 raised to power 24 grams. It means that 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to power 24 grams. So this is how AMU is related to grams. And if you want to convert it into kilograms, it's very easy. It will be equal to 1.67 into 10 raised to power 27 kilograms. So 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to power 27 kilograms. So it is how AMU is related to grams. So it was all about relative atomic weight and how AMU is converted into grams. Thank you.